Hello everyone, this is Vivek and you're watching Technologic. So today in this video we are going to unbox the all new RF remote control switch system by BlackT Electrotech. Here is a good news for all my viewers that we had got our first ever review unit from BlackT Electrotech itself through Amazon. So I'm very thankful to both of them. On this note, let's get straight into the video. So as you are watching, हमारे सामने एक बॉक्स है जो आता है BlackT Electrotech की तरफ से. So let's see what's inside the box content. यहाँ पे हमें मिलता है एक रिमोट और एक स्विचिंग कंट्रोल डिवाइस इटसेल्फ जो बहुत ही प्रीमियम है और हमें हाई लेवल की लग्जरी प्रोवाइड करता है. What's the aim of this product? The aim of this device is to operate light and regulate fan through your remote. ये प्रोडक्ट उन लोगों के लिए है जिनको बार बार उठ के लाइट्स ऑन ऑफ करना पसंद नहीं है. इस प्रोडक्ट में एक स्पेशल टाइप की बैटरी लगती है एंड द प्राइस ऑफ दिस बैटरी इज अराउंड 50 रुपीज. So the things which are required for installing this particular device is a screwdriver. Well, I had already made a video on this particular screwdriver and a tester जिसके थ्रू हम फेज वायर को डिटेक्ट करेंगे. ये कंट्रोल यूनिट में आप 4 लाइट्स एंड 1 फैन को ऑपरेट कर सकते हो. बट हियर इन दिस पर्टिकुलर स्विच बोर्ड वी आर हैविंग द कनेक्शन ऑफ 1 लाइट, 1 फैन एंड 1 ट्यूब लाइट. सो मैं 2 लाइट्स और 1 फैन को कंट्रोल करूंगा. नाउ लेट्स ओपन द स्विच बोर्ड फॉर असेंबलिंग दिस कंट्रोल यूनिट. Alright, now हम लाइव वायर को चेक करेंगे with the help of tester. कनेक्शन करने से पहले हम मेन सप्लाई ऑफ कर देंगे जिससे हम डिवाइस को सेफली असेंबल कर सकें. ये डिवाइस के जो 4 येलो वायर हैं वो लाइट्स को ऑपरेट करने के लिए हैं. ब्लू वायर फैन को रेगुलेट करने के लिए है एंड द रिमेनिंग रेड एंड ब्लैक वायर्स आर ऑफ डिवाइस इटसेल्फ. यहाँ जो ये दूसरा रेड वायर है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी रिसीव करने के लिए है जिसे हम बाहर ही रहने देंगे जो रिमोट से सिग्नल को रिसीव करेगा. येलो वायर्स को लाइट के स्विच के न्यूट्रल पॉइंट में कनेक्ट करेंगे. Similarly, we will connect the blue wire with the neutral of fan regulator. Now हम डिवाइस का रेड वायर स्विच बोर्ड के किसी भी लाइव वायर में कनेक्ट कर सकते हैं. और डिवाइस का ब्लैक वायर स्विच बोर्ड के किसी भी न्यूट्रल वायर में कनेक्ट कर सकते हैं. Alright, we are done with the connections. Now turn on the main supply to check whether the device is connected properly or not.
So lamp is connected with L1 of device and tube light is connected with L4 of device. So whenever I press L1, the lamp will going to turn on, and whenever I press L4, the tube light will going to turn on. You can regulate the fan by switching up and down in the remote. You can turn off all the appliances by pressing all off in the remote. If you find the product interesting, then I had provided the link in the description of this video. So आप वहां से जाके प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करना। एंड एट द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।